Good morning, students. Today we are going to discuss about the chromosomal theory of inheritance. Okay, आज हम chromosomal theory of inheritance के बारे में स्टडी करेंगे. This theory actually was proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri. Walter Sutton और Theodore Boveri के द्वारा propose की गई थी. Okay, what this theory is actually about? Okay, the theory about the chromosomal movement during the meiosis. The theory is about the chromosomal movement during the meiosis. meiosis के समय क्रोमोसोमल मूवमेंट का पैटर्न कैसा है, कैसे क्रोमोसोम्स बिहेव करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ओके, ये सारा पैटर्न, ये सारी स्टडी क्रोमोसोम्स के बारे में was given by Walter Sutton and Theodore Boveri. Okay. The movement of behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes. In this theory, these two scientists, they observed that the movement behavior of chromosomes was exactly parallel to the behavior of genes. कहने का मतलब है जीन्स का जो मूवमेंट होता है, जीन्स का जो बिहेवियर होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, एग्जैक्टली सिमिलर क्रोमोसोम्स का बिहेवियर भी होता है, जो कि वॉल्टर सुटन और थियोडर बोवेरी ने स्टडी किया था एंड नोटिस किया था. ओके, सो दीज टू साइंटिस्ट दे एक्चुअली कंपेयर्ड द वर्क दैट वाज डन बाय मेंडल. और मेंडल्स के लॉज में जो क्रोमोसोमल मूवमेंट एक्सप्लेन किया गया था, वही मूवमेंट इन्होंने अपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में दर्शाया था. ओके, एक्सप्लेन किया था. द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली दिस इज द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन. क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन कैसे होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. क्रोमोसोम्स कैसे मूव करते हैं, कैसे सेग्रीगेशन होता है, कैसे ग्रुपिंग करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. ओके, एंड these patterns of movement of chromosomes are exactly similar the patterns of movement of genes, and the segregation of chromosomes are exactly similar the patterns of movement of genes. Okay, so they worked and they compared their work with Mendelian laws. Okay, now actually what this theory is, I mean to say, what according to this theory is the chromosome and genes. The chromosomes and genes are present in pairs in diploid cells. Diploid cells में chromosomes और genes pairs में present होते हैं. ओके, और हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन जब होता है तो ये क्रोमोसोम्स और जीन्स पेयर्स से सेपरेट हो जाते हैं एंड दे आर ट्रांसमिटेड इनटू द हैप्लॉइड सेल्स और गैमीट्स. ओके, नाउ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन. अब ये क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट होते हैं? ओके, दैट मीन्स हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन जब होता है तो ये क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट हो जाते हैं? ओके, दे सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट्स के फॉर्मेशन के समय, और यू कैन से ड्यूरिंग द meiotic cell division or meiosis. Okay, these homologous chromosomes get aparted or get separated. Okay,
अब क्या होता है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, ओके, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया एंड दीज गैमेट्स दे आर यूटिलाइज्ड फॉर द फ्यूजन, ओके, एंड दिस फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एज यू नो वेरी वेल, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट्स सॉरी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, देन जाइगोट और फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द क्रोमोसोमल नंबर्स during the formation of diploid condition or diploid cell formation, okay. अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के समय ये जो क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रह जाता है, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन जब होता है तो क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रह जाता है, दैट मीन्स सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, ओके। तब ये हैप्लॉइड सेल्स या इनके जो क्रोमोसोम्स का नंबर जब हाफ रह जाता है तो ये क्रोमोसोम्स का नंबर फिर से यूनाइट करके जाइगोट में एक डिप्लॉइड सेल्स की कंडीशन को क्रिएट करता है और क्रोमोसोम्स का नंबर अब डबल हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ओके, एंड this can be studied further in our next slide. Actually, there are two specific points of this theory. What they are? इस theory के जो specific features थे वो क्या है? Number one, the chromosomes as well as the genes, they occur always in pairs. Chromosomes और genes हमेशा pairs में present होते हैं, okay? हमेशा अपना पैटर्न क्रोमोसोम्स जीन्स की तरह पेयर्स का फॉर्मेशन करके करते हैं, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज द टू एलील्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एलील्स का पेयर जो जीन में होता है वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होमोलोगस साइट्स पर प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स के होमोलोगस स्ट्रक्चर पर ही पर्टिकुलर होमोलोगस साइट्स होती हैं, ओके। उन साइट्स पर ही ये एलील्स प्रेजेंट होते हैं, एलील्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं, एंड ईच लोकाई और लोकस इज representing the each allele of the same character or same pair of gene, or you can say the character is represented by the same locus. Actually, before the work of Sutton and Boveri, there were three scientists who discovered the chromosomes inside the nucleus, and their names were Hugo de Vries, Correns and Sharma, okay. Whereas Sutton and Boveri, they proved the Mendel's laws with the help of chromosome or chromosomal movement during the anaphase of meiosis-I, okay. Here in the next slide we are having the chromosomal theory of inheritance by the picture that showing the pairing as well as the segregation of chromosomes. Here you can see in the picture how the chromosomes are paired and how the replication is also done, okay. Then homologous chromosomes, they are paired together and they are segregated, and the chromosomes are passed on to the gametes. The gametes are formed and they are transferred to the next progeny, okay. Now the important things to be noted from the inheritance of chromosomes or the theory of Sutton and Boveri. There are 2 points. What they are?
Actually, the chromosomes and genes, they always occur in pairs. Chromosomes और genes हमेशा pairs में pairs बनाते हैं. The two genes of pairing, they are located on the homologous sites on homologous chromosomes. The genes always they form the pair, and these genes they are located always on the homologous sites. हमेशा जीन्स पेयर बनाते हैं. और पेयर्स कहाँ पर बनता है? पेयर्स हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स की साइट्स पर बनते हैं. एंड दीज होमोलोगस साइट्स आर प्रेजेंट. और ये होमोलोगस साइट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ही प्रेजेंट होती हैं. Actually, you can see these are the homologous chromosomes. They have been formed here in this picture. You can see them. Okay, these are the homologous. Then G2 phase, that is forming the bivalent structure, and the chromosomes are paired. During meiosis-I also, the anaphase, the chromosomes are paired together, and thus during meiosis second also, the chromosomes are again paired, and they are separating from each other. The germ cells are formed, and chromosomes are transferred into the germ cells. Okay, now we have to move further. What the homologous chromosomes are? होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैव द सेम जीन्स इन द सेम लोकाई. होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं विच आर हैविंग द सेम जीन पैटर्न. सेम जीन लोकाई प्रेजेंट होते हैं. ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें जीन्स का पैटर्न, okay, same type of genes are present on the different chromosomes, and they are showing the alleles on the same location. Okay, they actually provide the points. ये क्या करते हैं? They actually points provide करते हैं to attach the genes at the same locus. ठीक है, ये genes कहाँ पर present होते हैं? These genes are present always on the chromosomes. So the chromosomes are able to align correctly, जिसकी वजह से chromosomes correctly align होने में सक्षम हो जाते हैं with each other, and thus they are able to separate during the meiosis. Okay, और इसी वजह से जब ये align हो जाते हैं parallelly with the same locus of genes, then they are able to separate during the meiotic cell division. Now, during the anaphase of meiosis-I, the two chromosomes are paired. दो क्रोमोसोम्स कब पेयर होते हैं? दो क्रोमोसोम्स meiotic cell division में एनाफेज के समय अलाइन होते हैं, and they are paired. Okay, picture 5.9 में दिखाया भी है. Okay, how they are paired. To understand this, the comparison of chromosomes of 4 different colors have been shown in the picture. Okay, and they are compared with the left and right columns. These two columns are shown here in the next slide. Okay, and they show the two different possibilities of chromosome pairing, chromosomal pairing. Okay, दो different chromosomal pairing को दर्शाती हुई ये पिक्चर दी हुई है इसमें. ओके, दो possibilities होती हैं. See, in one possibility, during the formation of gametes, the aggregation of chromosomes or the pairing of chromosomes happens, and thus the isolation or the assortment
also takes place during the formation of gametes. The first possibility shows that one long chromosome, okay, one long chromosome with orange color, that is paired with short green chromosome. Here in the structure we are able to see here orange chromosome, okay, that is making a pair with green chromosome, okay, and that is pairing the long one, that is making a pair with yellow chromosome, and the green chromosome that is making a homologous pairing with red chromosome, okay. In the next possibility, what we are seeing, the orange can go along with the red small chromosome also, okay, and thus these chromosomes they are forming the pairing with yellow chromosome long one, and the shorter red is forming the pairing with green short chromosome, okay. So these two different possibilities are there, and they are forming the aggregation of chromosomes during the formation of gametes. This is the idea of chromosomal theory. Then further, now the further this chromosomal inheritance pattern of movement, that was again shown by T.H. Morgan.